स्वागत है आपका क्वेश्चनिंग माइंड के एक और एपिसोड पे। मैं हूँ आपकी होस्ट सागरिका और आज मुझे बहुत खुशी है स्वागत करते हुए अर्जुन सिंह कादियान को। अर्जुन काफ़ी फेमस लेखक हैं फिलहाल, पर वो रिसर्चर और स्कॉलर भी है। अर्जुन, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन खुद करने दूंगी और आपकी किताब चाहूंगी कि आप किसी दिन साइन करके भेज दें। जल्दी होगा वो। आई एम वेरी वेल होपफुल एंड बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने मुझे। आई गॉन थ्रू अ फ्यू ऑफ योर पॉडकास्ट और मैंने देखा था कि बहुत अंग्रेजी में भी आप बड़े अच्छे इंट्रोज देती हैं। सो वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस कॉन्वर्सेशन. Hopefully this book and the next one and the third one that I'm working on, शायद तीनों का ही इकट्ठे आपको autograph copy दी जाए. My name is Arjun Singh for your audience. I am an academic and an author. I have authored my first book with Rupa Publications, which is Land of the Gods, the story of Haryana. The second book is Neeraj Chopra from Panipat to Podium, and the third book that I'm working on currently is one. Of course, I'm working on a sequel to Land of the Gods, and I'm also working on the story of evacuations. There are multitudes of things that I'm working on. I have experience in media, policy, political communications, a little bit of research, and in different aspects as a consultant as well. I worked in the Chief Minister's office in Haryana. I've also spent. I'm an alum of Observer Research Foundation and Konrad Adenauer Stiftung and Zeit Stiftung. I am well trying to emulate इसलिए the मैंने best आपको practices of. इंट्रोडक्शन बोला। I'm trying to emulate the best practices of people who inspire me. So yes, Right. learning from Well, them. your journey itself has been pretty inspiring considering all those credentials and experiences. And I've gone through your book. It's I thoroughly enjoyed it, honestly. I think my father and I are fighting over who's reading it right now. I'm just towards the end, and I think it's a मतलब इतना उसमें रिसर्च है, फिर भी इतना भारी नहीं लगता पढ़ने में. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. एंड जो हरियाणा की कहानी है ऐसे सेपरेटली मॉडर्न टाइम से मुझे ऐसे याद नहीं है कि पूरी इंडिया को हरियाणा के नज़र से देखे. तो ये पुस्तक मतलब बिल्कुल वही कर रही है. एंड मुझे कई सवाल आए थे जो एक पहला सवाल मुझे ऐसा लगा कि हरियाणा का मतलब काफ़ी उपजाऊ ज़मीन मानी जाती है. तो ये मतलब कई तरीकों में ऐसा है कि वहाँ पे मतलब उपजाऊ तो है ही, बट वहाँ पे और भी चीज़ें उगी हैं, जैसे कि मतलब जितने सारे जातियाँ आपने लिखी हैं उनके बारे में, प्लस कई सारे जो थॉट्स, जो आइडियोलॉजीज़ हैं वहाँ पे बहुत सारी आई हैं. तो वहाँ के लोग बहुत कुछ सीखने को तैयार है या सोचने को, एंड टू ब्रेक दोज बैरियर्स, क्योंकि आर्य समाज, वहाबीज, सिख्स, तबलीगीज, सबकी इतिहास वहाँ पे मतलब बहुत जड़ लेती है. तो आपको क्या लगता है कि हरियाणा को क्या अलग बनाता है इस तरह से? So one to begin with, thank you very much. एक broad idea यही था कि कहानी इस तरह से देखी जाए, बताई जाए, ताकि जो भी व्यक्ति इस किताब को पढ़े वो रिलेट कर पाए और उसको कुछ ना कुछ वो नजेस मिले कि यूटिलाइज जर्नलिस्टिक टर्म्स में इसको पेग बोला जाता है कि हाउ यू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द रीडर एंड देन यू टेल अनदर स्टोरी और योर स्टोरी और द स्टोरी दैट यू वांट टू शेयर. तो मेरी कोशिश यही थी कि एक लार्जर कहानी हो और उसके अंदर मैं हरियाणा की कहानी बता पाऊँ, क्योंकि एक चैलेंज स्टार्टिंग के अंदर यही था कि कैसे लोगों को इंटरेस्ट करवाया जाए हरियाणा की कहानी के अंदर, क्योंकि इसके पीछे का जो एक लार्जर मोटिव भी यही था, बिकॉज मेनी पीपल डू नॉट नो ऑफ हरियाणा एंड डू नॉट टॉक अबाउट हरियाणा फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. वो वहीं पर खत्म हो जाते हैं. इनफैक्ट आज के टाइम पे ये बात है, पर शायद 10-15 साल पहले इतनी भी नहीं थी. एक स्पोर्ट्स के मायने से देखा जाता था उसे. फिर गुड़गांव ने जो अपॉर्चुनिटीज पैदा की हैं, आज गुड़गांव के अंदर पूरे देश से और दुनिया से अलग अलग जगह से लोग आते हैं. तो गुड़गांव विच इज मिलेनियम सिटी इन मेनी वेज, वो गुड़गांव की पहचान बनकर और पहचान गुड़गांव से कुछ ना कुछ लेकर कहीं ना कहीं लेकर जाते हैं. सो इन दो वाक्यों के अलावा बहुत कम ही लोग होते थे जो हरियाणा को या हरियाणा के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा रुचि दिखाते थे या समझने का प्रयास करते थे. तो वो करेक्ट करने के लिए एक एफर्ट यही लगा था कि ये कहानी उस नज़रिए से कही जाए. दूसरा, थैंक यू वेरी मच. आइडिया यही था कि किताब इसी तरह से लिखी जाए कि कोई भी व्यक्ति पढ़े
उसको भी अच्छी लगे। और दूसरा, एज बैरियर या knowing English as a language should not be a barrier. See, English even today it's an aspirational language. हुँ, कोई व्यक्ति अगर कॉर्पोरेट जॉब चाहता है, कोई व्यक्ति अगर दुनिया भर में नाम कमाना चाहता है या देश से बाहर जाकर कहीं कुछ करना चाहता है, तो अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिस पे वो बहुत नोइंगली अननोइंगली डिपेंडेंट हो जाता है। और एक हुँ, दौर ऐसा भी था हमारे देश ने बहुत रीसेंट टाइम्स तक ऐसे देख रखा है कि माता पिता या प्रीवियस जनरेशन ये प्रयास करा करती थी कि बच्चे अंग्रेजी बहुत अच्छी सीखें। There's a reason why convent schools flourished all across the country and they did well because English medium education could eventually or could hopefully open a lot many doors for their children. And but भाषा कभी भी भाषा its sole purpose is communication. उसका हुँ, आइडिया यही है कि लोग एक दूसरे से अच्छी बात कर पाएं, अपनी बात अच्छे से कन्वे कर पाएं। बट अगर भाषा एक किसी को नीचा दिखाने के लिए या एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या कॉन्डिसेंडिंगली कुछ बोलने के लिए इस्तेमाल होती है तो वो गलत है। तो वो वो सारा का सारा मैं जानता हूँ कि अंग्रेजी भाषा एक एस्पिरेशनल एस्पेक्ट तो है अंग्रेजी में, बट अंग्रेजी इस तरह से भी नहीं होनी चाहिए कि लोगों को पढ़ने को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगे। एंड आई थिंक I would echo the views of सुधा मूर्ति जी। उन्होंने I heard a lecture of her somewhere जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड अंग्रेजी नहीं लिखना चाहती, आसान अंग्रेजी लिखना चाहती हूँ, वो इंग्लिश जो इस देश के लोग समझ पाएँ। हुँ, और वही इस बुक के अंदर भी प्रयास है कि अंग्रेजी इसी तरह से लिखी गई है, लैंग्वेज स्ट्रक्चरिंग इसी तरह से की गई है। बहुत ज़्यादा भारी भरकम शब्द नहीं है। कोशिश यही की गई है कि अगर 10वीं कक्षा का या 8वीं कक्षा का बच्चा भी कोई हरियाणा के बारे में जानना चाहता हो, वो भी इस बुक को पढ़ सके। But at the same time, people who are from across India, just like you are, Jharkhand, Bengal, Nagpur, all the places, right? वो भी इस कहानी को पढ़ने में वो रुचि दिखाए और उसको भी एक कनेक्शन फील हो। So yes, and I'm glad you were able to feel that while you read the book. Uh, to address the question that you posed, see, very well said. And in fact, a few days ago, I learned something from a senior officer in a private conversation a few days back. वो कह रहे थे कि वो हरियाणा से बाहर के थे और हरियाणा में सर्व किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि हरियाणा के बाहर रहते हैं तो कुछ और बात पता चलती है, बट हरियाणा में जब सर्व करते हैं तो पता चलता है कि बाकी हुँ, देश के अलग-अलग राज्यों, अलग-अलग प्रांतों से हरियाणा कई मायनों में काफ़ी आगे है। तो चाहे वो इकोनॉमी की बात हो, चाहे वो इंडस्ट्री की बात हो, चाहे वो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, बाकी देश से काफ़ी आगे है हरियाणा। एंड इसी बात को अगर हम एक्सटेंड करते हैं एंड स्टडिंग इन पैरेलली विद द क्वेश्चन यू आस्क्ड, हरियाणा, हाँ, हरियाणा बहुत चीज़ों की जननी रहा है। जो धरती उपजाऊ लगती है उसके भी कारण बहुत सारे पुराने भी हैं और बहुत ज़्यादा कंटेम्प्रेरी भी हैं। पर ये ज़रूर है कि हरियाणा हमेशा से इट हैज़ बीन लाइक आई से इन द बुक लैंड ऑफ द गॉड्स। अगर भगवद गीता की बात करें, अगर हम वेदों की बात करें या हम सरस्वती तट पर सभ्यताएँ जो बनी हैं, बिगड़ी हैं, जो खत्म हुई हैं और रादर विलुप्त हो गई हैं, कि उनका जो क्वेश्चन है वो कई दशकों तक या कई सदियों तक उठा भी नहीं था। उसकी जो रिसर्जेंस अभी जो हम देख रहे हैं, जैसे सरस्वती, सिंधु सरस्वती सभ्यता की हम आज बात कर रहे हैं, वो उनका उस वाक्यों का सृजन होना इज ऑल्सो टेलिंग ऑफ हाउ इंडिया एंड हरियाणा इज चेंजिंग टुडे। बट ऑन दैट लेटर, अभी के लिए ये जानना आवश्यक है कि हाँ, ऐतिहासिक काल से भी हरियाणा का एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर और आप ब्रॉडर आप इसी देखते हैं कि चाहे हिंदू संस्कृति हो या इंडिक संस्कृति या इंडिक सिविलाइजेशन की बात हो, तो बहुत सारे ऐसे वाक्य, बहुत सारे ऐसे किस्से कहानियाँ, बहुत सारा इतिहास हरियाणा के अंदर जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट कुछ ही दिन पहले मैं कहीं पर ये बात कर रहा था कि किसी से बात करें हिंदू सभ्यता की या भारतीय सभ्यता की, तो फट ही दिमाग उनका काशी की तरफ दौड़ता है, हुँ, यू नो, या मथुरा की तरफ जाएगा। बहुत कम ही होता है कोई ये बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र की तरफ जाए। बल्कि ये बात सच है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। 48 को उसका एक तीर्थ भी बना है जो हरियाणा टूरिज्म ने बनाया है। ज्योतिसर एक जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का साथ दिया था। तो वहाँ से लेकर आप इवन इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स आप आते हैं, तो यू वुड सी कि हरियाणा के अंदर अलग-अलग सभ्यताएँ, अलग-अलग थॉट प्रोसेसेस रादर फिलॉसफीज़ भी डेवलप हो रही हैं। हुँ, चाहे आप आपने तो जैसे तबलीगी की बात की, तो तबलीगी जमात जिसने
कोरोना के काल में बड़ा कंट्रोवर्सी के अंदर आई थी तबलीगी जमात, एंड वी आर टॉकिंग ऑन अ डे जब आज पूरा दिन ही न्यूज़ के अंदर यू नो कोविड का और चाइना के अंदर ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट का रिसर्जेंस की बात चल रही है। जब कोरोना शुरू हुआ था और आई रिमेंबर 23 मार्च 2020 इफ आई एम राइट, हाँ वही हुँ, 23-24 मार्च का वक्त था 2020 में। तब एक मुद्दा अच्छा खासा न्यूज़ में छिड़ा हुआ था कि तबलीगी जमात मरकज़ हुँ, का हुँ। एक किस्सा था, जी, जी, और जी। जिस वजह से कंट्रोवर्सी में आया था। तो बहुत कम लोगों को पता है कि तबलीगी जमात का जो सृजन है वो हरियाणा में मेवात क्षेत्र से हुआ है। उसी तरह से इसी के साथ पैरेलली अगर देखें तो वहाबीज़ यहाँ पर रहे हैं। आर्य समाज ने यहाँ पर बहुत सॉलिड पकड़ बनाई है। आर्य समाज वैसे तो जनरली वहाँ से है कि आर्य समाज का जो बर्थ हुआ था वो दयानंद सरस्वती जी भी बाहर के हैं, और आर्य हुँ, समाज का बहुत बार हुआ था, पर हरियाणा के अंदर जो पकड़ बनाई थी आर्य समाज ने वो अनपैरेलल्ड है। सो जी। यस, मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स, और आज के कॉन्टेक्स्ट में देखना है तो हमारे यहाँ आजकल डेरा और बाबा कल्चर काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो अलग-अलग मान्यताएँ हैं, अलग-अलग सोच है, थॉट प्रोसेसेस हैं, फिलॉसफीज़ हैं, लोग भी उनके पीछे हैं। To everybody's own and respecting everybody's faith, philosophies, their belief systems. Very well. तो हरियाणा। अम, ये जो आपने टाइमलाइन चूज़ किया है, जब हुँ, ये आपकी बुक सेट है, ये आपने जो कहा कि मतलब यहाँ पे भगवद गीता से लेकर सिंधु सरस्वती सिविलाइज़ेशन सब कुछ हुआ है। आपने ये टाइमलाइन क्यों चूज़ किया जहाँ पे आई थिंक औरंगज़ेब के मृत्यु के बाद से शुरू होती है ये किताब yes, yes, और फिर yes. So, क्रिश्चियन so, so I remember early in the days of writing this book. So one thing I think it must be clear to everybody who's listening to this conversation: in order to be a decent writer, I'm not even saying good writer, a decent writer, you have to read much more. तो एक किताब हुँ, लिखने के लिए आपको 1000 पढ़नी पड़ सकती है। तो मैं मुझे पता था कि मुझे ये क्लियर था कि हरियाणा के बारे में जानना है, पढ़ना है, क्योंकि हरियाणा को ही मैं अपनी कर्मभूमि मानता हूँ, काफ़ी वर्षों से यहीं पे हूँ, और मोटिवेशन भी हरियाणा ही है। तो हरियाणा है और देश है विदाउट अ डाउट। तो हरियाणा के बारे में जानना समझना कर रहा है। इट वाज अराउंड द सेम टाइम आई वाज वर्किंग इन द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, सो मोर एंड मोर दैट वुड आई वांट टू रीड एंड अंडरस्टैंड हरियाणा, both from historical, sociological, economic perspectives. And it only became natural that I, gained much information and was able to contextualize it and articulate it in a form of a book. But जब ये हो रहा था, I remember मुझे लगा था कि I don't know, have you read Land of Seven Rivers जी, जी। by Sanjeev हाँ, Sanyal? संकेत So बनिया था। Land, yes, so Land of Seven Rivers has a very large timeline. So it starts, हुँ, possibly with the beginning of Earth, and it runs to present. And हुँ, every line or every second line has some sort of a new information for the reader. And at some point, I wanted to do that. But what Land of Seven Rivers covers is the entire geography of India. हुँ, And so the book can draw the attention of almost every Indian. So you might be from Bengal and you'll still have something from Land of हुँ, Seven, yet at the same time you might be from Kerala. आपके पास वो कोई किस्सा होगा, गुजरात का कोई किस्सा मिलेगा, तो मिल जाएगा। तो सब लोगों को ड्रॉ करने का पोटेंशियल था। बट फॉर मी टू टेल द स्टोरी ऑफ हरियाणा, आई वाज थिंकिंग कि पूरा कवर करूं, बट शायद वो जस्टिस ना कर पाऊं, शायद हुँ, वो सब लोगों को वो कॉन्टेक्स्ट ना समझा पाऊँ कि क्यों मैं इस तरह की बात हुँ, कर रहा हूँ। So I was suggested by the best of lot to restrict my timeline and make it a grippy, crisp read. And उसके बाद possibly a second book or a third book could potentially be about the other timeline. So अभी जैसे even while speaking with you, I think I can tell you this. Okay, I'm working on a contemporary one, and I'm working on a third book, which will cover more of ancient stories of Haryana. So there's a kingdom of Yodhyas, जो largely पूरे इंडिया के अंदर हम बात नहीं करते हैं. There are many people who talk about Yodhyas in general, but Yodhyas were a flourishing empire in this part in Rohtaka या रोहतक,
which is sort of central Haryana, was the capital or so to say, that region was the capital, क्योंकि concentration ये वहाँ पे सब coins की और concentration from your ज़्यादा मिलती है. history में ये Yes, वही so कि उसका नाम. के जी, जी. सो सो जैसे योद्यास की कहानी हो गई, तो ये कहानी करने के लिए भी मैं एक थॉट है कि एकदम एक किताब उस पे भी आनी चाहिए. बट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि टू इंश्योर कि रीडर को मैं ड्रॉ भी कर पाऊँ, उससे स्टिक करवा पाऊँ और उसको वो कहानी बता पाऊँ, तो ये टाइमलाइन चूज़ की गई. दूसरा ये है कि ये जो टाइमलाइन है, इट बिगिन्स अराउंड 17th सेंचुरी. अब वो दौर था जब सो टू से द ग्रेट मुगल्स दैट मेनी ऑफ अस हैव रेड इन आवर हिस्ट्री बुक्स, कि जब मुगल्स को डिस्क्राइब करते हैं तो ये बताते हैं द ग्रेट मुगल्स सो टू से एंडेड अराउंड विद द डिमाइस ऑफ औरंगजेब. And उसके बाद the court was riddled and divided into factions. And one reason why it was divided into factions was because in the second half of Aurangzeb's rule, many people had started rising or for revolts. तो ये एक बढ़िया वो मिला था कि औरंगजेब के डिक्लाइन के वक्त local powers and power struggle जो बन रहा था, that started to take a different shape, which was different from how you'd see history. मतलब वो 200 साल लगभग, so from 1526 when Babur came in till around 1650s या close to 1700. अभी लगता है ये 150 पौने 200 साल का जो दौर है, इसके अंदर एक sort of stability थी in terms of what the Mughals were trying to do. And they had longer reigns um, compared to इसके बाद क्या हो रहा था. And mind you, ये एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, हिस्ट्री रीडिंग ना, एक तो हम जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हिस्ट्री समझाते हैं, तो आई कांट से इट बट कुड बी डेलिबरेटली अदरवाइज, यू नो अदरवाइज. बट ये जरूर है कि हम ना स्पेसिफिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहे होते हैं. सो जी बिल्कुल सो आप यूजुअली करते हो 1526 पे क्या हुआ, एंड देन यू मेक अ स्विच ऑन 1556. There's a gap of 30 years, and there's a lot happening in the 30 years. In 30 years, we've come from VP Singh Mandal Commission to Prime Minister Modi become, and rather, 1992 economic reforms were, we were also, in the on the verge of bankruptcy, and no, not bankruptcy is the wrong word, but ओके मैं yes, BOP crisis we are facing, and 30 years later, we are thinking of making unicorn after unicorn. So 30 years is not a small span of time, but when reading or how history is taught to us, we usually हम ये inflection points के बीच में gap बड़ा ज़्यादा हो जाता है. So अब आप ये जो 150 साल का था दौर, उसके अंदर कुछ हुआ, बट उस 150 साल के बाद जब औरंगजेब का जो सेकंड फेज आया था, तब एक चेंज आने दिखा आपको, एंड विच इज वेरी वेल fairly well documented. And in fact, many remarkable historians, I think, I can say this, and anybody who's listening to us, जादूनाथ सरकार की किताबें is just a go to. आप पढ़िए, you will get to learn so much of that phase. सो वो एक दौर था जिसके अंदर आपको एक नया पावर स्ट्रगल धीरे धीरे आपको फॉर्म होता हुआ दिखा. एंड ऑल्सो आफ्टर औरंगजेब डिक्लाइन ना, you see Marathas, you see Sikhs, you see Rohillas, you see the English, the French, you, all these powers began to rise. And for good 100 years or so, until there was some sort of stability, so to say, at least in India and even in this region in 1803, when the English became, when the English won the Anglo-Maratha War, the second Anglo-Maratha War, and मुगल कोर्ट के अंदर आ गए, तो एक उस पूरे दौर के अंदर एक बड़ी एनार्की थी इंडिया में भी और हरियाणा में भी. सो वो सारी चीज वहां से शुरू कर कर आई हैव रन अप टू मॉडर्न डे, क्योंकि उस दौर के अंदर वो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर to actually begin taking shape or begin giving shape to modern day Haryana. So that was the timeline precisely where it shows. Also, because another thing, like I was addressing in the last question, कि जरूरी ये था कि you as a reader who may be from Pondicherry, or you could be from Vizag, or could be from Hazaribagh, is able to relate to that history as well. तो
इस देश में औरंगज़ेब का इतिहास या औरंगज़ेब का जो डिक्लाइन है वो नोइंगली अननोइंगली बहुत किताबों में पढ़ाया जाता है। एंड आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ पैरेलल्स के औरंगज़ेब का इतिहास, औरंगज़ेब खत्म हो रहा है और उसके पीछे हरियाणा का कहाँ क्या भागीदारी थी या क्या रोल रहा था, और उससे आई एम ड्राइंग द रीडर एंड इंश्योरिंग दैट ही नोज व्हाट इज हैपनिंग इन अराउंड। सो कहानियां तो बहुत हैं। इनफैक्ट even when I say कि हरियाणा is land of the gods, I could definitely say India is a sacred geography and India is a land of gods. So वो सारे multiple angle हैं। Yes. ये नाम तो आपने हरियाणा के नाम के ट्रांसलेशन पर रखा, ये कहा है ना आपने? हाँ, हाँ, यस। सो हरियाणा का जो नाम है, मतलब हरियाणा को बड़े नामों से जाना गया है। बहुधान्य का एक नाम था, कुरुक्षेत्र, धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र भी एक नाम हुआ। बट हरियाणा एक तो हरियाणा नाम पहले से ही है, ऐसा नहीं है कि बड़ा रीसेंट कोई नाम है। दूसरा ये है कि हरियाणा का लिटरल अगर ट्रांसलेशन करें, वो संधि कहा करते हैं ना, संधि करनी है तो हरि प्लस अयन आता है। सो हरि हुए भगवान श्री कृष्ण या भगवान, और हरि के बहुत स्वरूप हैं, और आयन हुआ अबोड या होम। सो हरि प्लस आयन विच एक्चुअली ट्रांसलेट्स इनटू abode of gods and land of the gods. So that is how I you know broadly named the book Land of the Gods. यहाँ पे एक फनी चीज़ है कि ये किसी स्कॉलर ने ट्रांसलेट किया था, कोई एंशिएंट हिंदी किताब पढ़ रही थी, एंशिएंट हिंदी तो नहीं, मतलब कोई हिंदी की किताब पढ़ रही थी, वहाँ पे उनको मिला हरीलाल, तो कहती हैं कि ग्रीन रेड नाम था। इंसान का नाम ग्रीन रेड था। हरी का मतलब उनको ग्रीन रेड नहीं, भगवान का नाम है, तो यहाँ पे हरियाणा में ग्रीन की बात नहीं है, शायद हरियाली की बात नहीं है। तो एनीवे, बहुत बढ़िया। आपने इस You पुस्तक brought with हरीलाल ना, रिमेम्बर अ पॉइंट। वैसे ही ना, राम अगर हरियाणा के अंदर देखना है ना, राम अलग अलग तरह से लोगों के हमारी सोशल या कल्चरल हिस्ट्री के अंदर बहुत छाए हुए हैं। जैसे हुँ, लोकल जो पुराने नाम, राम खिलावन, राम फड़, राम दुलारी, राम प्यारी, हुँ, अ, और अगर बरसात होती है तो राम बरस रहा है, या हुँ, हुँ, दोज थिंग्स। राम एज अ वर्ड, जिस तरह आपने हरि का एग्जांपल दिया, मैं राम का एग्जांपल दे रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर राम कहाँ पर है। आई रिमेम्बर हॉस्टल के अंदर, सो आई स्टडीड एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो हॉस्टल के अंदर यू वुड नो के ना भी नो हंसरा, आई वाज एट स्टूडेंट एट हंसराज कॉलेज एंड स्टेड इन द हॉस्टल। तो किसी को नाम से अगर छेड़ना हो तो राम फड़। हरियाणवी एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, तो these are old names, but Ram has been an important part of life. So yes. So in you've mentioned several jatis, several sampradayas, and within this, even today, even in the modern day context, despite religious conversions, there's a lot of characteristics of the older jatis that are retained, despite religion changes. Now, how did this help or hinder, like according to the research that you did for the book, how do you think it helped or hindered the stability of society in those days? So one, at least two, I can definitely think of, and can share the larger story. One is so Rajputs who had converted to Islam were called Rangars in the region. Rangar. In fact, till date, there are villages in vicinity of Karnal which were uh, you know habited by Rangars, or people recollect that Rangars used to live here and Rangars left this land and shifted to Lahore or Punjab in the Pakistan side. Similarly, Jats were divided into different religions. In fact, so there were Hindu Jats, there are Sikh Jats who were, a prominent population in Punjab, were called Sikh Jats, and then there were also Muslim Jats who were called Mullah Jats. So ऐसा था, and this the idea, if you study its historicity, you would understand that Jats till date essentially follow a tribal or a clanal system, Mm, and because of that, they had their own social institutions and social
social institutions that they relied upon for administrative and judicial purposes as well, and even in terms of marriages, relationships, brotherhood, and things like that. And they have different coinages for that. Uh, so there are castes and there are communities wherein religion was changed. However, it when it came to um, battles wherein jihad was raised, then essentially the division was on religious lines. But it can be very well argued that the religion and the faith might have changed. The social and cultural institutions, their people's dependence on them, and their modern relevance has continued, may have declined in many cases. For instance, in the case of Khap Panchayats, Mhm. or reliability on Khap Panchayats or dependency on Khap Panchayats. But essentially, a lot of those customs and a lot of those traditions have continued till date. And religion might have made that difference, but very well can be argued that when, for instance, 370 was removed, the loudest roar probably came from Haryana, because many people have, countless people have from the region have lost their lives for the cause of Kashmir. So वो है जरूर, but nothing beyond say country या धर्म उसके ऊपर है. So caste is an identity of a Hindu social structure in Hindu society, but इसको evolve करते हैं, and when the battleground is on religion, तो वो धर्म की लड़ाई होती है, और when the battleground is nations, तो nation की लड़ाई होती है. Caste is a social structure, and a bigger realm is definitely धर्म and देश. So धर्म सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि, वो वाला thought process है. So वो definitely. I hope that addresses your question. Sure. Now that you've mentioned Khap Panchayat, I actually had an anonymous questioner sent across this question about what do you think their modern day relevance is. कि मतलब Khap Panchayat पहले जरूर काम आते थे to resolve on ground issues. आज की तारीख में उनके बारे में काफी कुछ लिखा गया है. कुछ I think 2 दशक पहले से ही काफी खबरें आती हैं वहाँ पे. जैसे कई बार बोला जाता है कि तालिबान जैसे बिहेव किया जाता है, औरतों पर काफी जुल्म किया जाता है उनके द्वारा. तो अब तो नहीं सुनने में आता. आई थिंक 7-8 years हो गए हैं that at least they are not functioning in the same mode. So और Mhm. एक तरफ में ये भी आर्ग्यूमेंट है कि उनको जानबूझकर they've been essentially delegitimized through this sort of disinformation, and it's not always the case. So, what is your view of the current day significance of such panchayats? Okay, so let me just bridge in with some little bit of a historical context. So, CAPS are a social institution. Mm, Social institutions in general are a reflection of people, and not, as one might think, not as often otherwise. Uh, जिस तरह से लोगों को परिवर्तित होने में, लोगों की समस्याएं, लोगों के थॉट प्रोसेसेस, लोगों की सोच बदलने में वक्त लगता है, उसी तरह से सामाजिक संस्थान या सामाजिक इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसको भी बदलने में वक्त लगता है. जिस और एज अ कॉन्सिक्वेंस समाज को भी वक्त बदलने में, कोई ऐसे बटन नहीं होता ऑन ऑफ किया उससे नहीं बदलता समाज. तो उस नजरिए से अगर आप समझने की कोशिश करते हैं, तो खाप्स वाज अ वेरी सक्सेसफुल सोशल सिस्टम which served the purposes mostly, social, as well as judicial at times. mhm, Now, खाप्स खाप्स are very much like कि जो लोग सामाजिक होते हैं, सामाजिक मतलब people who have a good reputation of being a sensible, being wise, being sensible, being judicious, being cautious, being a responsible man, and उम्र में भी थोड़े बड़े हो जाएं, जिसको जिंदगी का तजुर्बा हो, उन mhm, लोगों को नेचुरली खाप के अंदर उनका ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर लोड हो जाता है, क्योंकि उसकी गारंटी है आसपास के लोगों को पता है. mm, It's mm, not a passive system. So what is happening today is that we are picking up our mobile phones and we are talking to somebody and not really sure of what that person is like. In contrast, in smaller systems and village republics,
where people would not have mobile phones back in the day, or when people would not be pe- the real connection that people will have with each other was about that physical bond or physical relationship where they'll sit together, they'll talk to each other, they'll share their grievances, share their challenges, and the community was more bonded. It's not as passive as it probably is today. अ, तो लोग एक दूसरे से जुड़े रहते थे उस दौर के अंदर। उसी व्यक्ति को वो एलिवेट किया जाता था खाप के अंदर एक लीडर के तौर पे, जो सभी मायनों में, सभी नजरियों से, सभी लोगों के अंदर जिनका जिसके लिए इज्जत हो। सो खाप्स उस तरह से एक, अगर आपने सोशल सिस्टम्स के अंदर देखना है तो सोशल सिस्टम्स के अंदर उनकी एक रहती थी कि किस गांव से भाईचारा है या किस गोत्र में भाईचारा है, और उसके अंदर संबंध नहीं होने चाहिए, मैरिटल रिलेशनशिप्स नहीं होने चाहिए, इस तरह की बात एक एस्पेक्ट है। दूसरा एक होता था कि जुडिशियल एस्पेक्ट जो होता था, जिसके अंदर किसी भी कोई भी लड़ाई हो, कोई भी गिला शिकवा, कोई मुद्दा बड़ा बन जाए, तो उस मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए खाप इकट्ठी बैठा करती थी, खाप बैठी और रिजॉल्व करवा दिया, जस्ट लाइक पंचायत सिस्टम वर्क्स व्हिच इज ऑन आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड नॉट अ मॉडर्न पंचायत सिस्टम व्हिच इज अ गवर्नेंस सिस्टम, बट जैसे पंचायत बैठी लोगों को बात करके रिजॉल्व करवाने हैं, and publicly resolved हो जाता था। So this system used to work really well when our administrative units and administrative structures were, villages as republics, and कुछ you know क्राइसिस भी छोटे होते थे ना उस टाइम पे, ये थोड़ी हुआ करता था कि कोई स्टॉक एक्सचेंज पे किसी ने स्कैम कर दिया, या उस टाइम पे ये थोड़ी होता था कि आपको यू हैव टू हैव अ स्ट्रीम ऑफ लॉयर्स कि भाई अभी ये करना है, या फिर वो कॉर्पोरेट स्कैम्स थोड़ी हुआ करते थे। सो लोग भी काम कम हुआ, गए खेती पे डिपेंडेंसी ज़्यादा थी, दौर कुछ और था, समय कुछ और था, पैसे नहीं हुआ, पैसे के हरियाणा के अंदर लोकल कहा करते हैं टोटा हुआ करता। सो so in terms of means and larger availability or of material possessions as well as the resources in the society were rather limited, and as a consequence people's problems were less complicated, and people resolution of their problems were more simpler as well. So arbitration, mediation, conciliation is the larger that we speak about, alternative dispute resolution mechanisms, उसके ज्ञान के अंदर ये लाई करते हैं। However, and it worked really well in a simpler times and simpler society. But what has happened of late is, and खाप्स की रेलेवेंस तब बहुत ज़्यादा थी, इनफैक्ट आई वुड से 150-200 साल तक बहुत ज़्यादा थी, फिर तब से कन्वीनियंटली और अदरवाइज डिक्लाइन हो रही है। टू एड्रेस योर क्वेश्चन ऑन मॉडर्न रेलेवेंस, इसको पहले ये समझा जाए कि हाँ, जैसे आपने तालिबानी माइंडसेट की बात कर दी, यार ये ना, ये ज़रूर है कि there is no smoke without fire. But this is also true that it is very convenient for TRPs to or for media that is driven by TRPs कि कोई ऐसी sensationalist news बना दो, and which drives the discourse or discussion. For instance, you use the word Talibani mindset. Okay, you use Talibani mindset, but do you know of any decision or anything that they did which reflects that Talibani mindset? I remember the So articles of that time. That's why. So at least look, they can be wrong because आज के दौर में social media बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, तो थोड़ा सा transparency ज़्यादा आशा कर सकते हैं, पर उस समय नहीं था, तो मुझे नहीं पता कि कितनी सच्चाई है, पर जो घटनाएं होती थी, जो बताई जाती थी, वो काफी मतलब काफी खराब होती थी, स्पेशली जब आई रिमेम्बर एक तो था कि औरतों से सारे मोबाइल फोन छिनवा लिए गए थे, बोला था कि बैंड है गांव में क्योंकि वो उससे रेप होते हैं, मैगी खाने से रेप होते हैं। फिर एक था नहीं, कि केमिकली there were women who were married off to the rapists. There were women who were there were people who were told to rape the women of the other families. These were the stories that came out from the, and मैं बचपन से इंडिया का अखबारें पढ़ती हूँ तो ना मुझे नहीं, so what I'll tell you, so सारी what has happened is, okay, even in the three instances that you made a mention of, one, we could argue कि भाई where you read it, what you read, is it a proper reflection of what was said, उसके बारे में जा सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि
लेट्स से अगर किसी को पेट्रियार्की की न्यूज़ कवर करनी है हुँ। और उसको द जर्नलिस्ट सेज दैट देयर इज़ अ न्यूज़ इन ओडिशा, ओडिशा में जाकर कवर कर लेता हूँ। बट द एडिटोरियल बोर्ड सेज कि नहीं, इट्स गोइंग टू कॉस्ट अ लॉट, विमेन के ऊपर स्टोरी करनी है तो हरियाणा पास में है, हरियाणा पे कर लो। ऐसा नहीं है पेट्रियार्की इज ओनली अ स्टेट्स प्रॉब्लम, पेट्रियार्की इज लार्जली सोसाइटी के अंदर आपको हर जगह पेट्रियार्की दिखती है, वर्ल्ड ओवर पेट्रियार्की है। मतलब वर्ल्ड ओवर आई एम नॉट सेइंग, जनरली आई एम स्पीकिंग कि हर जगह आपको पेट्रियार्की के चैलेंजेस मिल जाएंगे। बट व्हाई इज इट दैट कि हरियाणा ही उस खाके के अंदर बहुत टाइम तक लोगों ने सेट कर लिया? Is because one, because of this larger or broader term called or argument which could be centered around lazy journalism. But two ये भी है, like I said, there's no smoke without fire, कि ऐसा है कि कुछ डिसीजंस, रिग्रेसिव डिसीजंस इतने ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए कि जो पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन है और जो पूरा इंस्टीट्यूशन का जो पर्पस है वो एकदम साइलेंट कर दिया गया। और ऐसा नहीं है कि वो डिसीजन आए और खाप फिर उसके बाद बैठी या लोगों के बीच जब निंदा हुई तो खाप्स ऑल्सो करेक्टेड ऑन देयर ओन ऑल्सो। एंड बहुत बार ना डिसीजंस खाप के ऊपर ना, खाप सिट्स फॉर बिगर कॉजेज। जैसे आप मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में जानना चाह रहे हो, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के अंदर डेली कोई डेलिब्रेशन या कोई मुद्दे के लिए खाप नहीं बैठती। खाप बैठेगी किसी एक बड़े कॉज के लिए, किसी बड़े डिसीजन के लिए, कि अगर जैसे एग्रीकल्चर रिफॉर्म के ऊपर कुछ बात कर दी थी तब शायद बैठ गई हो, या लैंड एक्विजिशन के ऊपर बात करनी हो तब शायद बैठ गई हो। छोटे मुद्दों के लिए खाप नहीं बैठती। और जब भी खाप के अंदर कोई डिस्कशन होता है या खाप का निर्णय अगर ठीक नहीं रहता, खाप इज नॉट अ बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं है, इट्स नॉट अ जुडिशियल सिस्टम। ऐसा नहीं है कि खाप ने जो बोल दिया वो बात डंके की चोट पे है। द कोर्ट कोर्ट डज नॉट अग्री टू, और कोर्ट डज नॉट गो बाय द खाप्स वर्ड। पर वहाँ पे लोग मान तो लेते थे ना, जब उनको अथॉरिटी तो दी गई है, लेजिटिमेट अथॉरिटी है, तो लेजिटिमेट अथॉरिटी दी लोगों ने, जी। और लोगों ने ही उन लोगों को बनाया। और अगर उनके निर्णय ठीक नहीं लग रहे थे तो एक कॉन्वर्सेशन चालू हुई। वो तो ठीक मान के चलेंगे ना, वो तो हम बाहर वाले बोल रहे हैं कि ठीक नहीं है, बट जो उनको भुगतना पड़ा वो तो भुगते ही हैं। हाँ, तो और जिनको भुगतना पड़ा, नॉट नेचुरली, दिस इज द थर्ड टाइम आई एम मेकिंग दिस पॉइंट कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। ऐसा नहीं है कि रिग्रेसिव या फिर गलत डिसीजंस नहीं हुए, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो उनके 4 अगर रिग्रेसिव डिसीजन हैं तो उनके 40 अगर कुछ अच्छे डिसीजंस होंगे उनको नहीं मान सकते। फॉर इंस्टेंस एक पैरेलल पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि फॉर इंस्टेंस अभी वेरी रिसेंट एक्चुअली 2 या 3 साल पहले जीन में खा बैठी थी, इसने डिसाइड किया था कि लोग जो अपने सरनेम्स के अंदर ऐसे नाम यूज करते हैं जो उनकी कास्ट बताए, वो नाम नहीं यूज करने, इन ऑर्डर टू इंश्योर कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो। दैट्स अ फेयरली पॉजिटिव स्टेप। यार एट द सेम टाइम अगर कोई ये बोले कि भाई लड़की के जीन्स पहनने से या कुछ पहनने के, दैट्स अ रिग्रेसिव, दैट्स अ थॉट, और उसके अगेंस्ट भी आर्ग्यूमेंट होता है। एंड ऐसा नहीं होता कि खाप के अंदर कोई बात हो गई और वो डंके की चोट पे हो गई और उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर ऑब्जेक्शन होता है, निंदा होती है, और फट से लोग ऑब्जेक्शन करते हैं क्योंकि लोग ही खाप को वो देते हैं और लोग ही खाप से वो खींच रहे हैं। और दूसरी बात यही आती है कि मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अगर जानना है खाप को, खाप्स की रेलेवेंस भी धीरे धीरे कम हो रही है। One, Khap does not anymore sit for, you know, so to say, smaller causes or smaller decisions or smaller questions. और दूसरा ये भी है कि कोर्ट की मान्यता ज्यादा है, तो लोग, people are dependent on courts more than they are dependent on Khaps, and which is naturally that's going to be the case because courts are a modern judicial setup जिसके ऊपर many people rely on, although even courts agree that alternative dispute resolution mechanisms should be followed. So वो, that's, life does not, sort of say black and white का नहीं होती, ग्रेज में चल रही होती है। And there's always some sort of a turmoil, some sort of a questioning, some sort of a conversation on critical and topics that keeps on happening, and यही conversation से निकलते धीरे धीरे समाज आगे बढ़ता है। That's my broader point. पर हाँ, ये It जरूर should है, be very transparent ये because let me sorry, conclude. I'm okay with you on Khap Panchayats. Why I will also provide some parallel points is when these news things occur. If you see modern day news, you have the AIMIM councillor's son being let off with a small fine after being part of a gang rape by modern day courts, right? The girl got This was no justice. precisely, no, this was precisely the argument. So in 1800s, when, so modern administrative and judicial systems जो हैं
are a product of colonialism. So mm, when the company in 1810 or 1809 tried to enforce new judicial systems, similar arguments, see, 200 years ago, similar arguments were given against the system. mm, So two arguments that I clearly remember is कि one was that कि एक आदमी ने चोरी की. mm, So somebody steals, so two people steal a loaf of bread. One stole because his family was dying of hunger and he had no other option. And the second one is possibly was, habitual offender, or possibly, was chilling with his friends or just stole, or is in a, whatever may be the reason. And you, what, whom are you going to give a bigger sentence to? mm, Because one, both the causes are different. Two, what if you set the parameter that he stole? He might have stolen a gold chain or he might have stolen a loaf of bread. It's both is still stealing and might invite almost equal, imprisonment. And that's a comparison that made 200 years ago. Third was that the idea of perjury. Now, courts, that report mentioned that courts are a passive system, wherein somebody, nobody knows the judge. Anybody could lie in front of the judge, and then it's on the other side to prove mm, otherwise. But that's not the case that happens in Khap Panchayats, mm, or the system that was prevalent back then. The argument they put forth is that if he commits perjury in front of his community members, he is afraid, or he has that fear of being socially boycotted. And if that happens, that essentially, is a bigger sentence for him, because back in the day, smaller societies, interdependency was large. mm, Being socially boycotted meant, or felt a lot larger than it possibly can today. If today people even leave cities and start a new life elsewhere. So all those arguments were given, and precisely 200 years ago. mm. And that is where challenges on modern judicial systems also come in. So think in terms of the pendency of cases. Because of the pendency of cases, modern courts there are definitely many commission reports, law commission reports, which talk of ADR mechanisms, that there could be mediation, there could be arbitration, and things like that. So definitely, and going back on it again, there's some sort of a balance that's required, and well, yeah. No, I think if Khap Panchayats were to work within the ambit of the law, actually also inculcating some of the modern day law and societal systems rather than remaining in the regressive social processes from, say, half a century ago, I'm pretty sure that there's a brilliant Hmm. case to be So, made so, for their so survival. definitely, there's Uh, something that could be worked out, which could define them or define the constraints, and then possibly find solutions. I but mean, there's also even noise recently. around them. The noise around them, because the case that I mentioned, as well as the case where this lady judge said that somebody molesting a child over her clothes does not entail sexual assault unless it's skin to skin contact. That this was a child, this was a POSCO case, and there was no Mhm. justice for the victim, and there's nothing that the family can do further. And this is forgotten. The news cycle goes by so quickly, whereas when I read about these cases, it lasted for some time, right? And so I think there's a lot of things that need to go into it. But yeah, if Khap Panchayats were to go beyond their current or past regressive thought processes on certain things, then I'm sure that they have a Yeah, certain. without a doubt. In fact, something on that can definitely be worked out. And I think there is, if I'm not able to recollect the number of that law commission report, Mm, but it does make a mention of utilizing such institutions, because it can very swiftly now bring down the pendency of cases. If you can bring two parties together and ask both of them to just work out a solution, uh, and many cases will possibly be solved. In fact, think in terms of the number of civil matters, um,
courts take decision being very conscious, and there's a reason why courts are being that cautious. But in divorce matters or in separation matters or civil matters, if some sort of a ADR mechanism or which is in line or in sync with how panchayats work could be worked out, it can possibly give a great solution. But then that's a another cause, another long discussion on how it can possibly happen. The fact is that they are more accountable, right, to the society. So I think that also Yes, makes sense. because people are those people who are reflecting those opinions are ones from the society as well, and they have to be, that semblance, that trust is also there. There are multitudes of things, but definitely something. Right. I also had no idea that Akbar's tomb was actually empty. That's something I found out from your book. Oh, I had no I idea. have. Most tourists have no idea. I think, yeah, and I think in the same context, probably Italian traveler Manucci, who wrote that account, he also wrote the same thing, that the traveler might be visiting but has no idea that the grave's empty. So yes, in the second phase, like of Aurangzeb, like I was mentioning, the there were many revolts against Aurangzeb. The Sikhs were revolting, the Marathas had risen, so did the Jats of the Braj Kshetra, Agra ke paas. So they rose to rebellion, and they rose to revolt, and so much was the that fury, that anger, that they ripped apart Akbar's tomb in Sukandra, and it was on the second raid that they tore apart the gates, and they dug open his grave, and they actually lifted those bones and threw them into fire. Um so to say, a Hindu end. But the larger point being that uh, the Jat fury was able to, or went to that level where they did something so strong and so powerful against, so to say, the emperor of Hindustan. And yes, that story is written by the Italian traveler Manucci, who was on in those years, who was traveling across India, and he learnt about it and knew that Aurangzeb was enraged by, after that. And but yes, he documented that story and was, yes, the Jat Fury. Um, I've read, and in fact, I remember reading it for the first time. I found it almost surprising, and for me also, when I first found that incident, and then I had to ensure that I, you know, found the original account. That if I'm writing the right thing, because saying something like that, writing something like that sounds, you have to be cautious about what you're Absolutely. writing, and that's an important part of book writing, that you cannot be casual with your words, you cannot be writing something irresponsibly. So I had to ensure that I'm checking some original account and what is written in that original account. So I went through Jadunath Sarkar, I went to others, and then I found Manusi's work, and this is where I found a very interesting story. In fact, the larger story of how the Jats became powerful in the vicinity of Delhi in the region of Agra, Bharatpur, is a remarkable story in itself. In fact, uh, if all goes well, I would love to write a larger chapter on it one day, because there are back-to-back stories of how Jats grouped together, 40, 50 of them, and they actually would go on raids, would steal treasury, and would do a lot more. In fact, making sure that this road, or this highway, so to say, of those times was actually unsafe for Mughals to travel, after the sunset. So, so interesting story there. I highly recommend, if anybody is, hearing this, to read about. No, do read this book. It's honestly, it's a really well written book as well. And like you said, जो Land of the Seven Rivers में आपको बार बार सरप्राइज होते गया. इसमें भी मतलब at least first कुछ pages ना मतलब बहुत ज़्यादा characters थे.
just to get used to that number of characters was a lot. And then वो पूरे कहानी की तरह चलता है, आपने थोड़ी लीनियर रखी है तो वो फॉलो करने में थोड़ी सुविधा होती है, नहीं तो है बहुत सारा रिसर्च है इसमें, तो I बट had to chop down a lot. In fact, I must tell you, my first draft was around 1,40,000 words, and it was a task to around 1,40,000. It was a task to chop it down to around 90,000. So ये ठक 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 ये भी काटो वो भी काटो वैसे चल रहा था. So yeah, in fact, that is how my second book happened because I had to chop down a lot of sports story of Haryana, and that is where my second book makes around 20, at least 30, 35% of the book, the sports history of Haryana, or how Haryana ended up becoming the, sort of a sporting nation in itself. I will actually love to discuss the second book on second podcast with you as well after I've read it. Because obviously that's a great athlete to talk about, and I think he's kept a pretty low profile despite his wins, and it would be wonderful to know his story from a closer perspective. But no, before I let you go, I have one more question. You've written about a lot of the modern descendants of very famous families, famous old Haryanvi families, right? You've written about the former chief minister. You've written about Saif Ali Khan and his Pakistani cohort of cousins, who have also been very active in Pakistan. I mean, they aren't lost to history. Then Mallika Sherawat, who it was, initially known as Rima Lamba. All of these people are, and these are just a few names I think I can think of right now, but you've written about a lot of them. So, how does Haryana's past bleed into its present and future? Definitely. So, see, broadly speaking, there's always history to a lot of things, or you know, that are happening in present. A lot of people who are rising to, larger stories have some sort of a family history or family legacy they're carrying. There are many, of course, and that you see in modern democratic republic and free India, that you see that there are many modern first generation remarkable stories coming up. Many of them from Haryana, without a damn doubt. Be it Neeraj Chopra for that matter, or be it Bajrang Punia, Yogeshwar Dutt. So you see all of that too. But there are definitely stories of people who've carried on their histories, and generation on generation, they've built upon what their family did. So be it from you know Chotu Ram. So Chotu Mm. Ram's family, it's third or fourth generation now, which is into active politics. The fourth generation, Chaudhary Brijendra Singh, is a former IAS officer. He gave his VRS and joined politics, and is now in member of parliament from in the Lok Sabha. Similar goes from Vimalama. She was connected to the Chajuram family. Even DLF, for that matter, DLF has made so much of Delhi and large part of Gurgaon, and in fact infrastructure projects all across India, and even abroad. DLF, the full name is Delhi Land and Finance. DLF was founded by a descendant of Haryana family. So there are multiple stories that you'd see, but at the same time you'll see many modern stories in the making. Manu Bhagat, young girl shooter, doing exceptionally well. So all of that is in making. So Haryana is giving the people who are carrying the legacy forward, yet there are people who are making remarkable news stories. Think about Manushi Chillar for that matter. Manushi Chillar is she won the beauty pageant. She's known across the world. She's done her Bollywood debut, and she's a first generation model, or it comes from a family of medicine practitioners. So it's interesting how Haryanvis are stepping out, and this is very well in sync and should be read in parallel with the larger story of India as well, that we were talking about just prior to this recording. How Indians, and even Haryanvis for that matter, are finally coming to, it's sort of some sort of a resurgence that India is seeing, that we are ambitious, we want to do big things, we want to aim large, and come what may, we are not afraid to face those challenges, and
go beyond and do be it setting up unicorns, being global leaders in things, being corporate leaders, being CEOs, establishing new institutions, or even aspiring to be number one in different parameters or different those larger goals that we are finally seeing. And the country is very well coming together to in pursuit of that goal. So I just pray and hope and wish that we always have this strong leadership or visionary leadership that ensures that there's this level of enthusiasm percolates down to Indians in general. So yes, All right. On that very optimistic note, I'll let you go. It's pretty late for you as well. Thank you so much for making the time today. thank you very much. Thank you very much for hosting. I hope your viewers enjoy this conversation. If there are any comments, if there are any notes, pointers, feel free to reach out to me. I'm on Twitter. I'm available on Instagram. Um, Happy to have this open for conversation. Happy to have this conversation anytime soon. Pick up topics which might interest you and talk about topics which might not. Sure. Viewers, I think Arjun has done the marketing for me, so please do feel free to drop a comment and definitely share this video if you find value in it. Thank you so much for joining. Namaste. Namaskar.